welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों बिग बी हुए इमोशनल आफ्टर वॉचिंग अभिषेक बच्चन्स न्यू फिल्म्स ट्रेलर? किस तरह पीसी रेज कर रही है टेम्परेचर एट प्री ऑस्कर इवेंट? क्यों शाहरुख खान है अपसेट विद अनुराग कश्यप? Today, I'm not someone else. Today, I stand amongst peers, amongst colleagues. I have goosebumps, I'm emotional. It makes me very proud. देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के देसी अंदाज ने फिर इंटरनेशनल स्टेज पर मचाई धूम. अपने इस ब्लैक साड़ी अवतार से पीसी ने फैंस के साथ साथ फैशन पुलिस को किया इम्प्रेस. प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट पर अपनी हॉलीवुड जर्नी को लेकर हुई इमोशनल. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आजकल हर टॉप हॉलीवुड इवेंट की जान बनी हुई है. पीसी को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक प्री ऑस्कर पार्टी में और यहाँ पीसी के स्टाइल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा. Priyanka Chopra chose a black sari paired with a strapless blouse for the event. और ये कहना गलत नहीं होगा, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने जीत लिया अपने फैंस का दिल. एक यूजर ने लिखा, "Wow, my God, amazing." Another wrote, "Wow, a sari. She looks hot." One more commented, "Oh my God, she looks so gorgeous in the sari." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "She looks beautiful, gorgeous mommy." साफ है पीसी के इस अवतार के सभी बन गए फैंस. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ डिटेल में अपनी हॉलीवुड जर्नी पर की बात. पीसी और उनके हस्बैंड निक जोनस अपने बेबी के बॉर्न होने के बाद से प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं और प्रियंका चोपड़ा की ये सिर्फ दूसरी प्रोफेशनल आउटिंग है आफ्टर बिकमिंग अ मदर. वैसे इस पर्सनल टाइम को पीसी पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं और रिसेंटली उन्होंने जोनस फैमिली और फ्रेंड्स के साथ की होली पार्टी, जिसकी पिक्चर्स हर जगह वायरल हो गई थीं. शाहरुख खान क्यों है नाराज अनुराग कश्यप से? अनुराग कश्यप ने शाहरुख खान को कैसे कर दिया काफी ज्यादा अपसेट. गुस्से में शाहरुख खान ने अनुराग कश्यप के फोन को किया डिस्ट्रॉय. शाहरुख खान कोई कमर्शियल करे या फिर फिल्म, फैंस को उनका हर एक अवतार पसंद आता है और रिसेंटली सामने आया शाहरुख खान का प्लस विटी अंदाज फैंस को काफी आ रहा है पसंद. और हाल ही में शाहरुख खान का ये न्यू प्रमोशनल वीडियो आया है नजर, जहां वो अनुराग कश्यप से नाराज दिख रहे हैं क्योंकि अनुराग कश्यप शाहरुख खान प्लस की जगह एक दूसरे OTT प्लेटफॉर्म की तारीफ में लगे हैं और शाहरुख खान का ये हिलेरियस अंदाज अब फैंस को काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने शाहरुख खान के लिए लिखा, "New day, new ad, but arcing at IMSRK is constant." #थोड़ा रुक शाहरुख now trending in India on number 4. एक और यूजर ने लिखा, "Really liked how the creators have used स्टील का डिब्बा, थाली, चावल, दाल and अचार to get the positioning of as something which common people could afford. No rich, master stroke. At IMSRK, don't underestimate the power of common man." #थोड़ा रुक शाहरुख. फैंस इसी तरह शाहरुख खान की कर रहे हैं हर जगह तारीफ. वैसे शाहरुख खान के फैंस ने जब पहली बार SRK प्लस कैंपेन को देखा था तो उनके होप्स हो गए थे हाई और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहरुख खान अपना OTT प्लेटफॉर्म ला रहे हैं. लेकिन कुछ ही समय में फैंस को इस कैंपेन की सच्चाई का पता चल गया. वैसे शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है. और वो बहुत जल्द एटली की एक्शन फिल्म और राजकुमार हिरानी की मच टॉक्ड अबाउट माइग्रेंट फिल्म पर काम शुरू करेंगे. वैसे फैंस
फैंस इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं कि हाल ही में शाहरुख खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि उनकी कमबैक फिल्म पठान 25 जनवरी को होगी रिलीज। यानी रिपब्लिक डे पर शाहरुख खान ने धूम मचाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। वहीं एक बड़ी अपडेट ये है कि एटली की शाहरुख खान स्टारर फिल्म के लिए साउथ की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा को फाइनल कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा इस फिल्म में एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का रोल प्ले करेंगी। वहीं शाहरुख खान का फिल्म में होगा डबल रोल। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, बिफोर शी गियर्स अप फॉर द रिलीज ऑफ काटू वाकुला रेंडू कडल, Nayan will visit Mumbai in the first week of April to wrap up the new schedule of Atlee Directorial. It is going to be a week-long schedule at Film City Studios in Mumbai, and Nayan is super excited about it. दसवीं के ट्रेलर को देखकर बिग बी हुए सुपर इमोशनल। बिग बी ने किया जूनियर बी की एक्टिंग को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित। लेकिन 10वीं के ट्रेलर के बाद दीपिका पादुकोण की हर जगह क्यों हो रही है बात? अभिषेक बच्चन, निमृत कौर और यामी गौतम स्टारर फिल्म 10वीं के ट्रेलर की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। लेकिन अभिषेक बच्चन के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट बन गया जब उनके डैड अमिताभ बच्चन ने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा। बिग बी को इस फिल्म का ट्रेलर इतना पसंद आया कि उन्होंने अभिषेक बच्चन की तारीफ करते हुए लिखा, मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। हरिवंश राय बच्चन। अभिषेक, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, बस कह दिया तो कह दिया। और बिग बी के इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए जूनियर बी ने लिखा, लव यू पा, ऑलवेज एंड इटर्नली। वहीं बच्चन फैमिली ही नहीं, यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य धर ने भी अपनी वाइफ के लिए एक इंटरेस्टिंग पोस्ट किया, जो है काफी हिलेरियस। दरअसल यामी गौतम इस फिल्म में एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं। आदित्य धर ने लिखा, एंड आई थॉट आई वाज द ओनली वन गेटिंग स्कूल्ड बाय यू, along with a smiling face emoticon and a heart emoticon. He called the trailer super fun. वैसे 10वीं के ट्रेलर के बाद से ही दीपिका पादुकोण अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और उसकी वजह है ट्रेलर में दीपिका पादुकोण के नाम का इस्तेमाल। दरअसल अभिषेक बच्चन फिल्म में अपनी 10वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने इंग्लिश लेसन के दौरान जब उनके टीचर उनसे कहते हैं रणवीर लव्स दीपिका, तो उस पर रिप्लाई करते हुए अभिषेक बच्चन तुरंत कहते हैं एवरीवन लव्स दीपिका। और अब दीपिका पादुकोण ने ट्रेलर में अपने नाम के यूज होने पर एक पोस्ट में फिल्म के मेकर्स का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है, थैंक यू टीम, #10वीं फॉर द लव, विशिंग यू गाइज द बेस्ट। इट सीम्स दीपिका पादुकोण खुश हैं कि उनके सिर्फ नाम को इतना प्यार मिल रहा है। वहीं अजय देवगन ने जब इस 10वीं के ट्रेलर की तारीफ की तो सोशल मीडिया पर यूजर्स कहने लगे कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ क्यों नहीं की। अजय देवगन ने लिखा, चौधरी साहब एट बच्चन, ऑल द बेस्ट फॉर योर #10वीं, जबरदस्त ट्रेलर, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म ऑन 7th April, #10वीं ट्रेलर आउट नाउ। एक यूजर ने लिखा, सर द कश्मीर फाइल्स का भी ट्रेलर रख लेते, अच्छा लगता, क्या आप भी उन्हीं लोगों में हो क्या? Another troll commented, कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर भी शेयर कर देता। एक और यूजर ने लिखा, Let's see if this film can tolerate and face competition with Kashmir Files. It seems अजय देवगन के पोस्ट का सभी को था इंतजार ऑन द कश्मीर फाइल्स, लेकिन उनके कमेंट को ना देखकर कुछ यूजर्स हैं अपसेट। उर्फी जावेद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उर्फी जावेद वड़ा पाव खाती नजर आ रही हैं। वैसे एज यूजुअल उर्फी जावेद को उनके इस लुक को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, इसके पास टॉप नहीं है क्या? एक और यूजर ने लिखा, इस पागल को किसी मूवी में काम दे दो भाई, नहीं तो ऐसी ही पागलपंती करती रहेगी।
एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर अपने 90s के स्टाइल को फ्लॉन्ट किया है विद दिस स्पेशल सॉन्ग। रवीना टंडन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा #Take1 and #Take2। मेरा स्टाइल भी 90s, मेरे दोस्त भी 90s, and सच्ची मुच्ची my jeans and shoes and bag all preserved from the 90s and me too. Ha ha ha, us too. At Anita Lumba 77 and at Neelam Kothari Soni walks off. मैम यहाँ देखिए मजी नहीं है। सोनम मैम। सोनम कपूर ने जब से अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को किया है अनाउंस, कपूर फैमिली की खुशी का ठिकाना नहीं है। और रिसेंटली पैप्स ने जब अर्जुन कपूर को बुलाया मामा तो उनके चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट। मामा बन गया। क्या बात है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे आजकल अपने को स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव के साथ फिल्म खो गए हम कहाँ की शूटिंग कर रही हैं और इस फिल्म के सेट से उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स को किया है शेयर, जिसे फैंस कर रहे हैं काफी ज्यादा पसंद। एक्ट्रेस कृति सैनन है एक ट्रू प्रोफेशनल। यही वजह है रिसेंटली टो इंजरी के बावजूद कृति सैनन ने अपने एक शूट को किया पूरा और अब कृति सैनन का यही वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। फिल्म सेल्फी के सेट पर इमरान हाशमी का बर्थडे ग्रैंड अंदाज में सेलिब्रेट किया गया, जहां फिल्म की टीम इमरान हाशमी के लिए गाना गाती नजर आई और अक्षय कुमार भी बने इस सेलिब्रेशन का हिस्सा। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर रिसेंटली शेयर किया कि एलए में बाय मिस्टेक एक कार ड्राइवर उनकी ग्रोसरीज लेकर चला गया। स्वरा भास्कर ने लिखा, "Hey, at Uber support, one of your drivers here in LA just took off with my groceries in his car while I was on a pre-added stop. It seems there's no way to report this on your app. It's not a lost item. He just took it. Can I please have my stuff back?" और अब स्वरा भास्कर के इस पोस्ट पर उन्हें यूजर्स जमकर कर रहे हैं ट्रोल। एक यूजर ने स्वरा भास्कर के ओल्ड वीडियो को शेयर किया जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ट्रोल करते हुए लिखा कि स्वरा भास्कर बिना डॉक्यूमेंट्स के यूएसए कैसे पहुंच गयी। मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है। समांता रूथ प्रभु और उनकी टीम की मस्ती अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है और रिसेंटली समांता रूथ प्रभु ने अपने स्टाइलिस्ट को दिया हेयर कट। Coming up on the show, eternally confused and eager for love की कास्ट ने जूम से किया exclusively interact। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me 3 talented young actors who will next be seen in the Netflix show Eternally Confused and Eager for Love. Please join me in welcoming Vihaant, Samat, Ankur, Rathee and Dalai. Welcome. Hello. Segueing quickly from there, a quick dating game since this show is all about love and mess ups. I'm going to say some old school dating rules. You guys tell me whether you agree with any of them or how you'd fix them and what you do instead. So men should always make the first move. Thoughts? Do you agree? Do you not? No. No. I disagree. Yeah. Yeah, I think it's. Go ahead. No, go ahead. I was just gonna be like, I disagree purely based on experience. Purely based on experience. Yeah, like I just feel like a lot of the time, because of this being such a long-standing rule, like everybody's just like, men have to make the first move, and then they get really stressed out and they get really nervous, and you're just standing there being like, I know you want to make a move, but I'm just gonna do it instead because you seem really stressed out about it. You're a Bumble kind of person. Yeah, where the woman You makes could the first move. You could say, not by choice. Okay. Oh, I was just gonna say, I think it's very sexy when a girl makes the first move. I think it's like, it's very, very sexy to see a woman who knows what she wants and is not afraid to communicate it. Yeah, that's like, obviously within certain means, with also respecting the man's boundaries as well. But like, yeah, it's jumping incredible. On you. Sure. Like, I'm like, consent. I think, yeah, it's like, it's awesome. It's really awesome because when I think about what I want in a partner, I want a woman who's going to be a pillar, who's going to be someone who is not someone maybe in the traditional sense, right? The idea of a woman taking a man's lead, but I'm very, very much of the opinion that I would much rather take my woman's lead more often than not. So yeah, it's awesome when that happens. Nice to hear. Okay, men should always pay for the date. I don't agree, but yeah, wage gap.
Let's narrow that down a little bit. Wait, I thought you meant wage gap. So yeah, men should pay because the women aren't getting paid anyway. Yeah. That is what he's saying. That is what he's saying, right? Yeah. Okay. Good. I mean, we gotta pay our dues, you know. Yeah. Fair. I appreciate that. I was gonna disagree, but now that you put it like that, I've reoriented my entire perspective. I'm never paying for a date. Just being Until whiz. I get paid the same as my co-stars. Ankur. I don't know if it's right or wrong, but I feel like I will always pay that first date. Second date, yeah, maybe we can split it or whatever. We go back and forth, but there's a sense of being a gentleman is you pay for that first date. I'm okay with it. Like Vihaant's saying, it's not the biggest price to pay for the male privilege that we all enjoy. I like this conversation. I like where it's going. Dalai, do you agree? I'm loving it. I'm just like, now anytime I'm out and somebody's like, hey, do you want to split the bill? I'm like, listen, Ankur and Vihaant said, you earn more than me. So basically, I don't have to pay. You have all the male privilege in the world. Okay, don't kiss on the first date. Don't kiss on the first date. Yeah, this is a thing, especially I think- in India. What are you talking nonsense. about? Please kiss whoever you want, do whatever you want. This is just live your life. Excuse But me, be it was for marriage, okay? India. Oh, Yeah, what are you saying, Vihaant? Well, what are you saying? Holding hands only. Yeah, okay. See, be careful of who you're with, because it's probably like a new person. I was just gonna say, it depends on who you're with. It depends on the circumstances. It depends on the vibe. Kissing is fun, man. Go for it. Why not? But Right you know, on. Vihaant, sometimes you kiss on the first date and then they're like, "Ugh, never mind, it's too easy," and then you're like, "Oh, well, now you're not gonna ask me out again." So it's like mind game. Yeah, it is, and that's terrible. Like, you should be able to kiss. Can you whoever imagine? want. Why is that? Like, what is that? You've asked me out, you want to kiss me, but now that I've kissed you, you don't want to kiss me again. The light Should I shaming. record called this slut and send it to a shaming. special someone? Vihaant, shut up. Okay. That's actually really heartbreaking. I hate that would ever happen to you or anyone else. That's so frustrating. And I think that's part of the reason why there's so many mind games that both of our genders have to play. It's this little big game of cat and mouse. Yeah. So true. Absolutely. Don't talk about your exes or your dating profile. Sorry, Don't do talk you about want your me to talk? exes on your dating profile. Don't talk about your That's kind exes of- or your dating profile. Like if you've met someone on Bumble and you're like, that other guy I matched with, he's also really cool. That's pretty obvious. Unless, like, you want to make people jealous and you're like, my ex has 7 houses and, like, is a lovely human being. And then you're like, okay, I can't compete ever, so what's the point? It's a moot point. I don't know why anyone would do that. I'm No, just no, saying, go you ahead. would be surprised at how many people talk about their exes on the first date. They just want closure. What they really want is to talk to their ex, but they can't. So they're You're talking so to random right. strangers instead. Parul, you and I were on the same level. You just said that and I was like, you know what, you're so right. People do talk about their exes. We'll connect off camera and become besties. Ankur, did you talk about your ex on your first date? No. Well, actually, it's funny you say that. In my past, a long time ago, I did have a situation where I had met my next partner before I had gotten out of my other relationship. So yeah, I did. I didn't know I was gonna fall madly in love with this other person, but yeah, I probably did. God. So you were just talking about your girlfriend at the time. I was just, she wasn't an ex. No, I was talking about my girlfriend at the time. Thanks, Vihaant. Thank you. Yes. Ankur doesn't do that. He's too sophisticated. He's too sophisticated. Lastly, men and women can't be friends. एक लड़का और लड़की के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती. Yeah, I think we need to separate all the genders across the world and just keep them in different rooms. Otherwise, it's chaos. You can't ever be friends. Can't have any. Dalai and I are not friends for that. Yeah, particular actually, reason. Ankur, Vihaant and I, like, we don't communicate outside of work. We just can't. It's just too much Yeah. tension. Or we do all the time. I think that they can definitely be friends. That's silly. That's ridiculous. But I will say that there is something to be said about, sometimes when something seems completely platonic, there might be an undercurrent of sexual tension there. And a lot of people don't like to admit that. Yeah. And oftentimes, more times than not, there is that current.
And I only know that because when we work on acting scenes, right, when we're performing, that's always something that's a question in our mind when we're asking our character, does my character find this person attractive? Yeah. That makes a difference, right? Sometimes we make friends based off of how attractive someone is, even if we don't have any intention of pursuing them. Yeah. Sure. Yeah, I think that's actually true. You know, it's not that men and women can't be friends, but I think that kind of probably comes from the fact that if you are attracted to men as a woman and vice versa, there is just that thing in the back of your head where you meet somebody and like there's that quick war that happens where you're just like looking at them and you're like, oh, would I? And it's just like a random Would thing that I? The happens. once over. Yeah. Anyway, thank you so much for joining me, guys. It's been an absolute pleasure. You guys are lovely people, and I hope we get to do this again. Good luck for the show. Of and all course, thank you for Thanks, having Paul. us. Thank you, Paru. your- Thank you so much.